Today we will discuss about electromagnetic radiations. First of all, we will discuss about spectroscopy. Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of the wavelength or frequency of the radiation. What is electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations is a form of energy that is all around us and takes many forms such as रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज एंड गैमा रेज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। रेडियो वेव्स की फॉर्म में भी हो सकती है, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में भी हो सकती है, एक्सरेज एंड गैमा रेज की फॉर्म में भी हो सकती है। Quantum mechanics suggests that it possesses some properties like characteristics of wave, characteristics of particle, like discrete packets of energy called photon. Each photon possesses an amount of energy that is referred to as a quantum. Electromagnetic radiation consists of two components, electric and magnetic field. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसमें टू फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बोथ फील्ड्स जो हैं ये प्लेन में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और सेम टाइम में ये एक दूसरे के मैक्सिमा और मिनिमा से पास करती हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है, ये जो ब्लू एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है एंड पिंकिश एरिया शोज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल डिस्कस पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज वेवलेंथ, distance between two adjacent crust or trough of the wave in a beam of electromagnetic radiation is called wavelength. Electromagnetic radiations में electromagnetic radiations की जो waves होती हैं उनके कोई भी दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स जो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो उसे wavelength कहते हैं। Units commonly used for wavelength are angstrom, nanometer, micrometer and meter. Frequency, number of waves passing a fixed point on the path of a beam of radiation per unit time is called frequency. Units commonly used for frequency are hertz or cycles per second, and 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Wave number, number of waves per unit distance is called wave number. What is energy? Electromagnetic radiation can be characterized in terms of energy possessed by each photon of radiation. Every photon of specific radiation possesses exactly the same amount of energy, which is however different from the energy possessed by a photon of a different radiation. Total energy of a beam of radiation is equal to the energy of a photon multiplied by number of photons in a beam. Unit of energy is joule. It can also be expressed in electron volts. 1 electron volt is equal to 1.6022 into 10 to raise power minus 19 joule. Energy of photon of electromagnetic radiation is related to the frequency, wave number and wavelength of the radiation as follows. E is equal to hv. Now here if we put the value of V, that is c over lambda, then equation become like this: h c over lambda. We know 1 over lambda is equal to wave number, and in this equation h is Planck's constant with a value of 6.625 into 10 to raise power minus 34 joule second. And what is C? C is the velocity of electromagnetic radiation in vacuum with the value of 2.998 into 10 to raise power 8 meter per second. It is also known as velocity of light. Electromagnetic radiation of all wavelength travel with the same velocity but varies with medium through which it travels and depends upon the refractive index of medium. Above relationship, this one relationship tells us that energy of photon is directly proportional to frequency and wave number of radiation and inversely proportional to the wavelength of radiation. If we see in this equation, then this equation tells energy of photon is directly proportional to frequency and wave number and inversely proportional to wavelength.
Now we will solve numerical problem. If electromagnetic radiation has wavelength 50 nanometer, then find its frequency, wave number and energy. Simply we will हम क्या करेंगे इसमें कि फ्रीक्वेंसी के जो फार्मूलाज हैं वो लगाएंगे और हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, वेव नंबर का फार्मूला लगाएंगे, एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, वैल्यू ऑफ c इज 2.998 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज 50 नैनोमीटर, देन v इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। वेव नंबर, what is the formula of wave number? That is 1 over lambda. Simply we will put the value of lambda in this equation and we will find the value of v. Wave number. Energy is equal to hc over lambda. Value of h is 6.625 into 10⁻⁻34 joule seconds. C is 6 into 10⁻15 per seconds and lambda c over lambda की होल वैल्यू हमने जो पीछे निकाली थी वो यहाँ पे पुट की है। इन फ्रीक्वेंसी वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c over lambda, that is 6 into 10⁻15 हर्ट्ज। सिंपली हमने यहाँ पर c over lambda की वैल्यू पुट की और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। थैंक यू।